already we have recorded minimum 10 sessions for you. This is your Yes, sir. 11th, but the last time we have done only half of the session. Yes, sir. Now you can see this is a tourist. Today, more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as Sahara Desert or the Antarctic. Okay, what are the benefits and disadvantages for tourists who visit such places? Okay, so this is the Hmm. question: advantages or disadvantages. Means you can say that today more and more tourists, means you can say nowadays or today, both are the same. Sorry, Nowadays, nowadays, yeah. nowadays a large number of people are visiting different places around the world where conditions are adverse. For example, very low temperature in Antarctic and high temperature in Sahara Desert. Yes. I think there are few benefits for going this adventurous tour or journey, but on the contrary, it has some detrimental effect too. I will explain my point of view in following paragraph. ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया. तो पहला पैराग्राफ मैंने इसके पहले वाले में आपको Hmm. समझाया है. आई एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन. Yes, sir. Paraphrase the question and you have to add your opinion. When you That is have that body paragraph you told, no? That is the thing. now, this is the introduction, first paragraph, that is called introduction. No, second one will be the body paragraph, no? You told me that. Second, That only. second one is the body paragraph. अब second में आप चुनेंगे कि why people visit where conditions are difficult. So you can start to begin with. Okay, Yes. there are a large number of people who have the desire to see this world when they are alive. In addition to this, many people, all the time you have to change the words. Many people or several human beings, after their retirement, they plan to visit different places. Okay, as a result, they choose the country which is quite fascinating and attracting to them. Okay, the first. The second one is, look, being a place residing a very hot place, such as very high temperature in South Africa, people always want to visit the places where the ice is surrounding and where the weather is quite chilled. So they wanted to have some different experience of the weather and the atmosphere. So this region, they are attracted to visit Hmm. such places where life is really difficult for them because they are not used to it. Finally, they visit, however, they visit these places, however, they sometimes they are trapped because of the low network area and unknown places, or sometimes they don't know the regional language or the locality. So in this way, they always are trouble in trouble. Now you have to see some of the disadvantages or disadvantages who visit. Okay, the second paragraph you can start also. Yeah, I am agree. On the contrary, I am agree with these people to visit different, okay, beautiful places around the world, but they should always maintain, they should always have some proper location and information about the places. Okay, a person
we have seen visiting to the remote area of a country, it is always they find in jeopardy and in trouble because in mountain, in lakeside, in forest, sometimes they are disconnected with the network area and they find themselves alone without any help. Sometimes they lost the connection with the outer world. So these are the benefit and disadvantages. Okay, so these are the disadvantages. Many times people they don't know their language, so it is very difficult to communicate. And other places sometimes they confront with the goons or some antisocial element, or sometimes they also find themselves that their life in danger. Hmm. Okay, so this is the disadvantages. I insist, I suggest those people, it is good to travel around the world. However, they should contact their embassy, they take a proper help, and if their health condition is allowed, they must visit these places. So these are the thing. And two paragraph okay, then we have to go with conclusion that it is true that people are visiting the remote area or outer skirt of the city because of their interest and desire to see the different part of the world. On the contrary, they sometimes they find themselves in the trouble because of these areas are adverse for them. Sometimes they are not used to with their weather conditions because they have been brought in and brought up with a different weather conditions. I think they must visit, but always take a proper consult. Guidance. Yeah, proper ads, proper equipments, and information to visit the place. This is the way structure of, and you know, when you have to see the answer at the end, Hmm. they have also given the answer. You will see in 5 band, sometimes 6 band. See, this is writing task 2, and one person has written band 5. Now, I would like to ask you to read from here, and I will explain what are the things. Read it. The candidate focuses on tourists visiting the desert rather than on visiting places where conditions are difficult. So the prompt is not fully addressed. Means this first, I would like to show you why this candidate has got only 5 band score. Okay, so Yes, sir. first you read from here. The globalization is the most important topic for all the people. Okay, They want to know what is happening around and what is the reason of for that. The people discovering the things are, and getting well aware about hidden things. The hidden ka spelling is also wrong, no? At double D, no? It should be. that's why wrong. That's why he got 5.5. No, otherwise you The, need to score 7. Lot of things are wrong, and we have to the see tour. Okay, I'll read ahead. the tourist speak it. The tourists are visiting the desert more as compared to other places. Although the conditions are a bit more difficult in such type of places, but they are excited to know about each and everything. Okay, this is the intro that he has written, whatever. But it is something repetition, some of the spelling mistakes, and not the standard language, but Hmm. something he tries to manage. Now, next paragraph. The benefits to visit such areas is that they actually want to let people know what is the difference between the life in desert and other normal places. It is shown in one of the Australian movie which is cast on a Japanese. In movie, the Japanese spelling is wrong again. Na? Goes to the desert for some research about how to survive in deserts. His car stuck into the desert. Then he just
keeps try to get out of there, and at the end to he became succeed. After moving forward some distance, he watched a canal of water and he jumped into the water, and but depth is not so much. He dies because his neck hit by stone into the water. But English is not okay. I think the Not good. thing. And he Uh, is only focusing on the desert and on this movie. And they don't ask only about that movie and desert. That's why this is called task response. You are not closer. Sometimes they ask something else and you answer something else. yeah, That's why you are not but coming. you don't need to put any stories in that. If this You, he's put, you can put it, or you don't need to put it. you will give one example, but you should not Okay. answer it. He is exaggerating in all sentences. Three, four sentences we give him only for the adjectives. Now, after moving forward some distance, look, he is Oh, explaining a complete movie. Understand? Complete movie. yeah. Right. Reader. Now, the So other. it makes us realize that when you found a canal in desert, especially, first make sure that how deep it is. Hmm. But this is not the, I think, question, or this not been asked. That's why I ask you to read so that you can understand the question is something different. Answer Yeah. is something different. Now, let's. I secondly. And secondly, the disadvantages to visit the desert is that the actually rate is more. What Casuality. Cas- rate is more means what is that meaning? The sorry the casualty rate is more in desert as compared to other discoveries. well, When tourists go to the desert, they even don't know either they will return back to home or not. look, still it is second paragraph also in desert. He Yes, sir. focused only on desert, but look, Antarctic means very chilled atmosphere. Yes, that place is not mentioned anywhere. And that's why people and how I have explained you, like people get a lot of difficulty because area, local area connectivities, and sometimes weather conditions, Yeah. sometimes they're not used to it, and they're asking the same. They're asking what are the, like, no, like adventure if they are having, okay, what are their advantages or disadvantages of visiting. More and more tourists are visiting. It is good they are visiting. So that's why. Now the last one is the cases. Cases talk. What is that? The cases talk means? That whatever he is written, but it is wrong. The case is that. The cases, the people are going to desert more because they are more things to do, discover, like mines, minerals, medical related preventions, etc. Here is another example that one people of got diamond from desert which was in UAE. They took it as pebbles, but when they came back to home, they realized that were diamonds. You can see now it is out of the topic. अब चलिए Yeah. देखते हैं क्या आपको पता चला. Now by सर five ये band. सिर्फ 5 बैंड है, तो ये 5 बैंड मीन्स सम टोटल इज व्हाट 5 बैंड आउट ऑफ व्हाट? मैं बता रहा हूँ. अब देखो इस चार क्राइटेरिया है. टास्क रिस्पॉन्स 25%. तो ओके 25% टास्क रिस्पॉन्स मतलब क्या पूछा है क्या बताया. तो इसने ओके 25% मुश्किल से उसने 10% ही पाया, लेकिन हो सकता है उसने वर्ड पावर जो लेक्सिकल रिसोर्सेस. 1 मिनट. हाँ नहीं 15 नहीं. अरे वहीं ना सैनिटाइजर के नीचे 500 के. यस सर सॉरी. होता क्या है ना कि उसने टास्क रिस्पॉन्स में बहुत कम पाया, यानी कि 10% पाया, लेकिन उसने कुछ ऑल्दो का इस्तेमाल किया है, यानी कि वर्ड पावर जो लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं उसमें ओके 20% निकाल लिया है, और ग्रामर में फिर कम उसको मिला है, लेकिन बराबर है. कोहेजन एंड कोहेरेंस में कुछ मिल गया, यानी कि आपको चार क्राइटेरिया है. आप लिखते हो सकता है आपका टॉपिक पे नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपने ग्रामेटिकल रेंज का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, उसमें से आपका मार्क्स मिल सकता है. जैसे आप 10th पास कर गए हो तो आप 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स में से एक आपका पूरा अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी बराबर. के 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं.
हो तो सकता है उस, एवरेज हाँ, एवरेज हो जाता है. एवरेज निकल जाता है, तो वही इसमें है। अब आप पढ़िए इससे, दैट आई विल एक्सप्लेन द The कैंडिडेट। candidate focuses on tourists visiting the desert rather than on visiting places where conditions are difficult. So the prompt is not fully addressed. नॉट एड्रेस, मतलब ये पहला रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं है। आगे सुनिए, आगे Hmm. पढ़िए। There is an attempt to discuss some benefits and disadvantages, but ideas are limited. जो हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया, बहुत सारे Hmm. तकलीफें होती हैं, बहुत सारे मजा Hmm. भी, तकलीफें Yeah. कि हम वी आर नॉट यूज टू इन दैट Yeah. कंडीशन, बट वी वुड लाइक टू सी बिकॉज ऑफ वी आर क्यूरियस। एंड गुड भी है ना, अच्छा भी है, बट यही तो प्रॉब्लम होता है। सम पीपल दे आल्सो दे आर ट्रैप इन जियोपार्डी। People Hmm. are from chilled area, means like very cold area. You, when they come to the high temperature area, they are not able to cope up. That's why they are in adverse conditions. और कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है, लोग Yes, sir. लैंग्वेज आप नहीं जानते हो, You कभी are कभी disconnected with the world now. दैट्स कंडीशंस आर डिफिकल्ट। तो आप उसके बारे में बताइए, आगे देखिए। The response is organized into paragraphs, हाँ, बट द but the फोकस, focus of each is not always clear. तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें रिस्पांस दिया है, 4 पैराग्राफ दिए हैं, तो उसने कुछ पूरा किया है, ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन फोकस डिजर्ट पे डाल दिया। आगे पढ़िए। While cohesive devices are sometimes faulty, देखिए as कोहेसिव डिफरेंसेस क्यों है, अगर आपको इसके बारे में भी जानना है ना, yes, sir. तो अगर ये आपका कम हो गया तो इसमें 25% मार्क्स हैं इसके। तो कोहेसिव मतलब जैसे आज कंपेयर टू, ऑल दो, बट, बिकॉज ऑफ दिस, अगर आपने यूज जैसे वाइल का इस्तेमाल करते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन, एज अ रिजल्ट। कैसे मैंने आपको समझाया, एक वर्ड दिया जैसे एज अ रिजल्ट, मेनी पीपल Hmm. क्यूरियस टू विजिट different places, and these places are quite fascinating. As a result, they plan to make a tour where the conditions are quite difficult. तो हम लंबा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सेंटेंस, बिकॉज का इस्तेमाल करके, एज ए रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑल दोज। वो यहाँ पे देखिए कोहेसिव डिवाइसेस आगे, एंड द सब्जेक्ट The रेफरेंस subject of the reference pronouns is sometimes ambitious, ambiguous, ambiguous. Okay, although the conditions are a bit more difficult in such type of places, but they are excited। excited. ये थोड़ा सा अच्छा बना दिया है कहीं कहीं, ठीक है, समटाइम्स। Hmm. तो अब देखिए द बेनिफिट्स टू विजिट सच एरिया इज द एक्चुअली वांट टू, कहीं कहीं इसने अच्छा बनाया है। देखो द रेंज ऑफ लेक्सिस यानी कि वर्ड पावर समटाइम्स लिमिटेड। देखिए द पीपल डिस्कवरिंग द थिंग्स, yet the content is quite adventurous at times. Some research about how to survive in desert, canal of water, depth, deep casualty rate, ये सब इसमें इस्तेमाल किया है ना, तो थोड़ा उसको मिल। Hmm. देर आर अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देखो यही मैं आपको बता रहा हूँ, but these usually contains error। This what is the reason for that, जैसे although, but here is another example that, यही तो है, आपको एक्सपैंड करते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मुझे लगता है कि आज ये फोकस आपने किया ना, तो अब Hmm. ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरे पे डिस्कस करते हैं। अब मैं Yes, sir. आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, नाउ आई विल आस्क यू योर आइडिया। हेलो, Yes, वन, sir. एक मिनट। This is, employers sometimes ask people applying for job for personal information, such as their hobbies and interests, and whether they are married or single. Some people say, देखो ये भी तो ये जनरल भी जनरल ये है ना, Hmm. IELTS 11 जनरल ट्रेनिंग, General training. और इस तरह के आपको सवाल मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने के लिए। Some people say that all in all levels from primary schools to university, इसको सोचिए और मुझे बोलिए उसी तरह प्लान करके, ठीक है। People say that in all events of education.
from primary school. Some people say that in all levels of education, yes, a lot of people. चलिए अब मुझे आप इसको करके बताइए कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे। जस्ट कम्युनिकेशन आप ओरल कीजिए, बाद में हम लिखिएगा। A lot बस of people think there is only more in more learning and only more. Lot of people think there is a better मैं अब समझ on. गया, आपकी बात को समझ गया। हाँ, अभी क्या करना है ना, आप ये आपको ये सारी चीज़ों पे लिखना शुरू कीजिए। मुझे कम से कम 2 ऐसे लिख कर दिखाएँगे ना, और इसमें 40 मिनट का टाइम होता है। okay. 40 मिनट में जब लिखना शुरू करेंगे तो वर्ड अपने आप बन जाएँगे। मुझे एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, तो है ना? एटलीस्ट आप मेरे को स्पेसिफिकली कौन सा ऐसे यही, जस्ट यही। chalk it out and let me know. One is this and another some. 11 जो कैम्ब्रिज 11 है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है. कैम्ब्रिज 11 में 4 आपको मिलेंगे आपको। मैंने Writing आपके task मोबाइल पे मुझे याद है 2 भेजा था कि इसमें 4 हैं, चलेगा. है ना? चलेगा सर. 11 में I'll do 2 ना. This आप this 11 में आप देखिए सब में 4-4 मिलेंगे आपको। तो आप चलेगा. एक एग्री डिसएग्री का चुनिए और एक ठीक लिखिए है. प्रॉब्लम। First will be the introduction, okay? यस, बिल्कुल। Second and third will be the agree and disagree part. हाँ, And last will be the conclusion. बिल्कुल। एक चलेगा. करके This बस आप ठीक. करके दिखाएँगे ना, फिर मैं आपका 2 सेशन और है, ठीक है? चलेगा. तो हम हर सेशन आपका रिकॉर्डेड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर में मिलेगा। अगर नहीं होता है ना तो आप फिर बोलिएगा सर 1 मंथ और कंटिन्यू कर लीजिए, मैं आपके साथ फिर काम करूँगा। No ठीक है? problem, sir. तो एक हम बार लोग, चूँकि मुझे we'll मालूम है complete this session once of 12 classes. Then I'll also see what I can cope up with or what I need a help or we have to नहीं, continue. Then we can decide. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपकी सेशन में प्लान करके आपके साथ जाऊँ और मैंने किया है। Yes, sir. मेरे को actually क्या है, mainly तो I didn't know the I wanted to clear the logics कि what is the IL thing. गुड ना, इट्स गुड। Yeah, yeah. Because वो एक बार क्या है, I was raw and everyone is raw to give the IELTS, but फिर भी I don't know, everyone has their own this. I am not that studious or so I wanted to know the logic. Then I can just prepare myself and go ahead with ki how I have to place the things and make it properly done. मेरा एक ग्रुप का सेशन है राइटिंग का। ग्रुप Okay. चाहें तो एक बार ज्वाइन करके देख लीजिए। अच्छा. Okay. अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, उसमें स्टूडेंट हैं आजकल के ज़माने के, देखिए वो लोग इसी पे काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ क्या काम करता हूँ, क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा. अगर आपको लगता है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। No problem. चलेगा. कभी आप when will it be ये that group का? टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है, इसी टॉपिक पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ लोगों पे। ओके, ओके, ओके. नहीं इसका बट टाइम व्हाट टाइम है मतलब यू टेक दैट 6:30 का टाइमिंग होता है, 6:30 का टाइमिंग होता है, तो कल आप करेंगे 6:30 में? थिंग. विल सी कैसे कल का विल आई पुट योर मैसेज और व्हाटएवर वी कैन डू. बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये मैंने, चलेगा, चलेगा. दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, मैंने आपको जनरल पूछ लिया, अदरवाइज दैट इज नॉट नीडेड, बट इफ यू हैव क्यूरियोसिटी यू कैन आस्क मी, आई विल नो हेल्प। प्रॉब्लम, नो एक प्रॉब्लम. सेशन, थैंक. आपका 2 सेशन बाकी है, तो एक सेशन में आप उनके साथ ही, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, उनके साथ भी ले सकता हूँ। ओके सर. ठीक है? आप देख सकते हैं बाकी लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? या तो सर.
आज आपको मैंने व्हाट आई हैव गिवन यू द होमवर्क। यस सर। 11 में सो आप चार है, उसमें से दो चुन लीजिए। ठीक है ट्राई सर। write and respond 250 words logically. You have seen that what I'm expecting. ओके। यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं इसके जवाब, ओके। मॉडल आंसर्स पूरा ओके। कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दिए गूगल पे। फुल फुल ओके। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। देखिए बहुत सारे पोर्टल आएंगे, बहुत सारे वेबसाइट आएंगे जिन्होंने इसका जवाब दिया है। ओके। बात समझ में आ गई है आपको? क्या पर मैं उस गूगल में इफ आई डू दिस तो मतलब आई विल गेट द वर्ड्स यू मीन टू से कि क्या कैसे प्लेस करना एंड ऑल दैट थिंग्स। वो मैं मेरा काम है आपको आइडिया देना। आप उसको पता कर सकते हैं कि बाकी लोग लिखते कैसे हैं, मॉडल ओके। आंसर क्या होता है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, है ना? चलेगा सर। तो यस मैं सर। आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई हैव थैंक यू। सक्सेसफुली विथ यू मिनिमम 10 सेशन। दो और हैं, तो मैं उसको चाहता हूँ कि आप मैं अपनी जिम्मेदारी को आपके साथ अच्छी तरह से पूरा कर सकूँ। So now we'll start with the speaking thing today. I have got, नहीं, I think I'm just going to leave now. I have to start Oh, final session after 6 o'clock. So I okay have sir. 10 minutes right now, but 5 मिनट थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है। थोड़ा यहाँ देखिए, आपको एक हिंट देता हूँ। यस इस सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट टू। मैं चाहूंगा कि स्पीकिंग पार्ट वन, द एग्जामिनर आस्क द कैंडिडेट अबाउट हिमसेल्फ, हिज नेम, हर हूम। द पहला जो होता है ना, पहला में मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हाउ ऑफन डू यू गो आउट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल। हाउ फ्रेंडली आर यू विथ योर नेबर्स, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, फैमिली और फ्रेंड्स। इस तरह के सवाल हैं, वो आपको जवाब देना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्राइब अ राइटर you would like to meet. You should say who the writer is, what you know about this writer already, and what would you like to find out about him or her, or explain why you would like to meet this writer. मान लीजिए कि सबसे बेहतर राइटर है इंडिया का चेतन भगत, ठीक है। हम्म। तो आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है 2 मिनट के अंदर, और आपके सामने दिखाया है यहाँ पे कि कौन है राइटर, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, और क्या जानना चाहेंगे उसके बारे में, और क्यों उससे मिलना चाहेंगे। 2 मिनट बोलना है लगातार, एक भी ट्राई करना है कि वर्ड्स को रिपीट ना कर सके। अभी आप अगर आपसे मैं पूछूं कैन यू स्पीक, कि नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन माय कंट्री एंड हिज नेम इज चेतन भगत। Mr. Chetan Bhagat is a well-known writer and he has written many novels, and some of the best movies have been made and produced on the base of his true stories. तो आपका पहला हु द राइटर इज, देखो अभी टाइमिंग 2 मिनट के अंदर ही बोलना है, और एक एक वर्ड को रिपीट नहीं करना है, क्लियर बोलना है। वट यू नो अबाउट दिस राइटर ऑलरेडी। So I know this writer because when I first read his book, Five Point Someone, actually I'm not so much bookworm, but I am really starving to read some of the books some of which are quite interesting. One of my friends suggested me that read this book, and I read, and really I liked. I was mesmerized. I was really surprised the word that he has used, the emotion that he has raised, and I would like to find many things about him. I would like to be fascinated with his personality. I would ask him how did he manage to write so many books and novels. Did he take inspiration from the real life, and explain why I would like to meet him. I would like to meet this writer because really he becomes a role model for me. He is quite popular in my country. Many of the youngsters are behind him. Many of the movies which are liked by most of the people around the world. One of his movies also has been selected for the best IFA award and Asian film categories. So because of his personality, I would like to meet him, and that's why
आई वुड लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट माई बेस्ट राइटर, दैट्स ऑल अबाउट मी। तो ये 2 मिनट के अंदर आपको बोलना है। तो ये मेरा एक आइडिया है, आप इससे बेहतर बोल सकते हैं, लेकिन नहीं याद बेहतर आप ही बोलते हो सर। आई विल ट्राई। बेहतर का मतलब इट इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स दैट आई हैव गिवन। मैंने एक आंसर दिया पॉसिबल, आप यस चेंज सर। करते हैं राइटर को और अच्छे तरीके से बोलिए, कोशिश कीजिए, ये रिकॉर्ड में है जो मैंने आपको बोला। यस सर। कीजिए कि एक वर्ड को दोबारा रिपीट न करें। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, मैंने जो बताया या फिर आपके दिमाग में कुछ है, कोई दूसरा राइटर, जैसे शिव खेड़ा बहुत अच्छा राइटर है और उसका एक बहुत अच्छा बुक है यू कैन विन, जीत आपकी, जो बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत अच्छा मोटिवेटर है, या आपके दिमाग में कोई राइटर है? बोलिए। राइट नाउ तो ऐसा मैं नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट। राइट। तो याद रखिए, जो सवाल आपको आते हैं उसमें झूठ बोलना होता है। जरूरी नहीं कि आप मिल ही चुके हैं, मिलना ही है, या आप राइटर को जानते हैं। झूठ बोलने का मतलब आपको कलाबाजी यानी कि शब्दों को बोलने की क्षमता के बारे में जानना है, स्किल्स के बारे में जानना है। ठीक है? चेतन ठीक है भगत सर। का मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं ना, आप भी जानते होंगे। हाँ जी। तो बस अब हमको होशियारी से जो पूछता है, जो पॉइंट्स दिए हैं वही बताना है। तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए, एक आप 2 मिनट का एक सेशन अभी आपका चलेगा। नाउ टेल अबाउट दिस क्यू कार्ड, दिस इज द पार्ट 2 एंड यू हैव टू स्पीक। देखो यहाँ पे लिखा है, एक बार आप पढ़िए क्या लिखा है। यू विल You हैव have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are going to say. You can make some notes to help you if you wish. तो नोट्स तो मैंने खुद बना दिया बोलकर, यानी कि 3 मिनट से ज्यादा हम लोग बातचीत कर चुके हैं। बराबर है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, सेकंड ये बोलने से पहले। 1 मिनट में आपको तैयारी करनी है कि क्या बोलना है। बराबर है। वैसे भी हम लोग 5 मिनट इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं जी। आपसे पूछता हूँ, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड आई विल कैलकुलेट इट। आपकी टाइमिंग देखूंगा, बोलिए, स्टार्ट कीजिए। I am not that keen about the any writer, but I I know some of the writers, but not specifically. I can take any. मेरे को actually I am not इतना, या तो let me prepare for the next time and I'll कोई come बात back. कोई Yeah, बात yeah. लेकिन मैंने आपको जो ट्रेनिंग दे दी है ना, समझ में आ गया ना कि ठीक है, राइटिंग ठीक है। के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन इतना जरूर है कि आपको बोलना जरूर है, क्योंकि वहां पे हम बराबर। बोल सकते हैं। वहां पे हम ये नहीं बोल सकते यार मैं तो जानता नहीं हूँ किस राइटर के बारे में, तो ऐसा गलत या बराबर। सही, आपको प्लान करना है, बोलना है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो यस चलिए, सर। मेरे और हैं, इसमें इवैल्यूएशन भी होगा, स्पीकिंग भी। अब आपका लेना शुरू करूंगा, ठीक है? नो तो प्रॉब्लम। मिलते हैं, अगर आपने सब कुछ कर लिया तो नेक्स्ट वीक हमारा मंडे को सेशन होगा। अच्छा, अभी टुमारो विल नॉट बी डूइंग। अगर आप चाहते हैं ग्रुप में करना सेशन, तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, वैसे मतलब ग्रुप में नहीं भी करेंगे तो वी कैन गो फॉर सेशन अपना जो जैसे रहता है रेगुलर। ठीक है, तो हम 2 सेशन है ना कलेक्ट करके, और संडे को भी करके हम फिनिश कर सकते हैं, ये पूरा सीजन हम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? चलेगा, ऐसे देख लेते, विल आई विल गिव यू मतलब मैसेज, देन विल सी अगर जैसे भी होगा। नहीं ठीक है ना, वी कैन या डू टू। तब तक आपके पास ये 2 है ना सेशन, आप इसको लिख डालिए, मैं चलेगा। इवैल्यूएट। तो कल हम कर लेते हैं ना, इसमें क्या है, इट इज गुड फॉर मी टू फिनिश इट बिकॉज रियली आई हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, यस, यस सर, यस सर। you have to also respond me as I am working with you. Okay, ठीक है so सर। take care. Then I'll see you tomorrow. I'll ask you to ओके। join. Thank you. सर।